Okay, so um, all right. Hello everyone, and welcome to session 9. So the forms that were given to all of you, these are the responses. I asked you to choose whatever pathways or whatever topics you want me to cover. Now, most of you have done SQL basics, and in pathways, you've chosen Unit 4, Pathway 1, which is coroutines. So, I will be covering this one today, and by that, I will also be covering coroutines. So, I will uh, essentially be covering both of these in today's session. And about Unit 3, sorry. So, Unit 3, I did half of the fourth pathway of Unit 3, which is the last pathway. Now, the rest of it you will do on your own. Like I said, I will be giving the answers to every quiz and every one app that you have to make on your own at the end of each unit. So, like that, I will give the solution code for Lunch Tray app, which is the app you have to make at the end of fourth pathway, and I will be giving the quiz answers to that pathway. Other than that, today we will be doing Unit 4, Pathway 1, which is coroutines. The form will be sent to you again after today's session, and coroutines and this one will be removed. All the other options will still be there, so the form will still be sent out, and then you can choose for the next section whatever the majority of you choose. I will be covering that. This is just to show you what the majority is. All right. So Unit 4, Pathway 1 is coroutines. Now, whatever is given in this code lab, Introduction to Coroutines, it's not much and it's really not in detail. So, I will cover whatever's in this. Other than that, I would prefer that you watch some videos on the internet other than this code lab. This code lab is really not sufficient. इसमें coroutine में जो भी है launch async whatever functions are there सब बहुत ही एक एक लाइन का लिखा है. That's not going to help you to build an app honestly. You'd need a lot more information than this to actually use coroutines. There is one site, this site I will be sending it today in the message. This is a really great site I found, and whatever functions or whatever you will learn in this, they're explained very nicely and very simply in this. So I prefer that once you go through this code lab from this session, sorry, after that code lab, I suggest that you watch a few videos on the internet. I will send the video links also. The site is this blog is very nice on coroutines. You should definitely read through all of this. Then, other than that, a few YouTube videos. I'll send the link, the good ones, which will help you uh, understand coroutines more. Because this is really not sufficient. Uh, all right, so let's start. Welcome to Unit 4 of Android Basics. You're now over halfway done with this course, so congratulations. Previously, you learned about the Jetpack navigation and architecture components. You worked on 4 different apps, applying new skills you learned throughout the course. Now you can build apps where your users can navigate through multiple screens of your app with ease. Now, this unit is focused on helping you build apps that can get data from the internet. This is a big step in your Android development journey. The apps you've built so far displayed information that was already built into the app, like a words list. But sometimes you can't include all that information up front in the app. Sometimes the latest up-to-date data needs to come from a source that's outside your phone. It needs to come from something we call a server. You can think of a server as a computer or group of computers that can take certain types of requests and provide appropriate responses. Many of the apps that you use on your phone connect to a web server.
For example, the weather app on your phone gets data from a weather server and displays it on the screen. The news app gets articles and headlines from a news server, and so on. Being able to download data, both text and images, onto the phone will allow you to have a richer and more useful experience for the users of your app. To learn these new concepts, you're going to be building the Mars Photos app. It displays a grid of different photos of the planet Mars. The grid is implemented as a recycler view, which you're already familiar with, and you'll be building this app in two stages by making use of some third-party libraries called Retrofit and Coil. Remember that a library is a grouping of code that helps developers achieve a certain purpose. In the first stage of building the Mars Photos app, you will make a request to a web server with the Retrofit library to get the list of all the Mars image URLs. This is all text data. The image URLs are not the images themselves, but the addresses where we can retrieve the images from. In the second stage, you will use the Coil library to actually load the images. For each URL, you will make a request to download the image and load it into the appropriate image view on the screen. Before we dive into the Mars app, though, we'll talk about an important part of programming, which is concurrency. You can imagine that something like having the app get data from a server would be a non-trivial task and could take some time to accomplish. The time duration can depend on factors like how fast the internet speed is or the size of the data that we want to download. So if this process ends up taking a long time, we don't want our app to freeze or just sit around waiting for the results. Our Android devices are powerful and can do multiple things at once concurrently, so we can still be responsive to the user while we are waiting for the result from the server in the background. Work can be split up into threads. The main thread is responsible for displaying the UI and responding to the user if they click a button or scroll the screen. Meanwhile, we can have a background thread that is doing time-consuming work like making a request for the Mars data. Coordinating between these two threads can be tricky, but luckily, Kotlin offers coroutines as an easy way to perform background work in your app and to write the code in a way that reduces the risk for errors. So you'll first learn about coroutines in the Kotlin playground before applying it within the context of the Mars Photos app. There's a lot to cover, and there will be some challenging new concepts ahead, but we're confident that you're ready for this. After this unit, you'll have the skills you need to get data from a web service into your own app, which unlocks a whole world of possibilities. So let's get started and see what Mars looks like. Okay, so like I said, this concept is very huge, coroutines, and it's really not explained in detail here. So अभी मैं इसका ही बता रही हूँ, so that at least you can go through this code lab. This code lab is important. You should first do this. Then it gives you a very basic idea. तो इससे ऐसे नहीं कि तुम कोई coroutines का randomly कोई वीडियो उठाते हो या कुछ भी उठाते हो and you have no idea कि क्या चल रहा है. उससे better है first take this code lab, do it, read through it, or watch this session, and उसके बाद then go to other sites which provide those concepts in detail. So let's begin. तुम लोगों ने ऐसे apps देखे होंगे बहुत बार. ये एक जैसे ऐप है, तुम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हो और ये के साथ स्क्रॉल हो जा रहा है, राइट? दैट्स नॉट अ वेरी गुड ऐप. ऐसे तुम 2-3 बार क्या फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एंड यू वोंट ओपन एन ऐप लाइक दिस. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि जो भी तुम कोड लिख रहे हो, इट्स बोथ रिस्पॉन्सिव एंड फंक्शनल. So uh, this example here is what happens if long running tasks such as downloading images from the internet are not handled correctly. So while the functionality works, the functionality is working, right? You can see the pictures, they're downloaded, you can scroll through it. The scrolling is jumpy and it looks very unresponsive, and you would not like to open an app like that. So let's not make those apps. To avoid this, we learn something called threads. Thread क्या होता है? Thread तुम ऐसे समझो कि it's a say it's a line, and a line has a lot of points, right? A line is made up of points. So a thread is like a line, and then on that thread or on that line, there are a lot of points
These points are the instructions to be executed. एक-एक करके execute, they're in order. एक-एक करके instruction execute हो जाएगी, and then there's a start of the thread, and then there's the end of the thread. So all the instructions execute, then you reach the end of the thread. So a thread is, you can think of it as a single path of execution for code, and each line of code that you write is an instruction that's to be executed in order on the same thread. Meaning, there's this line, it's a single path of execution. तुम्हारे पूरा ऐप का जितना भी कोड है, चाहे तुम्हारे पास 4 क्लासेस है, 1 मेन क्लास, 1 अडैप्टर क्लास, जो भी है, 4 XML फाइल है, all the code has to be in a single line of path. You can think of thread as a single line of path for all the code in your app. It's a path of execution. एक एक करके चीजें execute हो रही है. It's an order. And every line of code that you have written is an instruction, and these instructions are ordered कि main से पहले जा रहे हैं, फिर एक जैसे तुम main में code लिखते हो कि एक line लिखते हो कि adapter से उठाना है, तो thread में कैसे जाएगा? main पूरा पूरा main नहीं जाएगा, फिर पूरा पूरा adapter नहीं जाएगा main, थ्रेड में, सॉरी, थ्रेड में ऐसे नहीं जाएगा कि पूरा का पूरा मेन फाइल जा रही है, फिर पूरा का पूरा अडैप्टर फाइल जा रही है। इस थ्रेड में ऐसे जाएगा कि मेन से जितना भी कोड है जो सिर्फ मेन का है वो हो जाएगा। फिर अगर सपोज़ कोई मेन में कोई कोड ऑफ लाइन है जो कॉल कर रही है टू सम अदर क्लास और समथिंग एल्स, तो फिर वो वाली लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। फिर जब वो खत्म हो जाएगी और फिर जहाँ पे भी वापस छोड़ा था वहाँ वो वाली लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। तो इट्स ऑल instruction that's to be executed in order, which is in the same thread. So अभी तक हम threads पे काम कर रहे हैं and we didn't even know it. Uh, what the thread that we're using is mains. Every Android app has a default main thread, and it's usually the UI thread, but ज़रूरी नहीं है कि हमेशा main thread UI thread हो। मतलब कभी-कभी तुम्हारा UI thread main thread से अलग हो सकता है, but usually ये होता है। um, अभी तक हमने जितना भी कोड लिखा है, it's all in the main thread. On the main thread. Her instruction is waiting for the previous one to finish before the next line executes. So पहली line execute होगी तब, जैसे तुम पढ़ रहे हो, तब तक तुम ये line नहीं पढ़ोगे, तुम इस line को पढ़ के तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, right? So it's like that. ऐसे जैसे इसमें ब्रेक्स आ रहे हैं, ऐसे ब्रेक मत इमेजिन करो, एक एक लंबा सा इमेजिन करो कि ये पूरा बस इतना एक थ्रेड है। तो जब तक तुम ये वर्ड पूरा नहीं पढ़ लेते, तब तक तुम इस वर्ड को नहीं पढ़ोगे, राइट? सो जस्ट लाइक दैट, जब तक पहले वाली इंस्ट्रक्शन पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं होती, यू वेट till it's finished before the next line can execute. लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल सा एक ऐप हो जाएगा जिसमें सिर्फ एक मेन थ्रेड होगा। ये तो बहुत ही सिंपल ऐप होगा और हम ऐसे ऐप्स अपने फ़ोन में यूज़ नहीं करते हैं, ना ही ऐसे ऐप्स हम बनाना चाह रहे हैं। So in a working app or a running app, there are more threads in addition to some in a main than in addition to a main thread. So एक्चुअली अगर तुम इमेजिन कर रही हो कि अगर एक थ्रेड मेन थ्रेड है एंड देन रनिंग ऐप में और भी सारे एडिशनली बहुत सारे थ्रेड्स हैं, इट डजंट मीन कि तुम्हारा प्रोसेसर एक्चुअली अलग-अलग थ्रेड्स पे काम कर रहा है। नो, रादर कि तुम्हारा प्रोसेसर स्विच कर रहा है बैक एंड फोर्थ बिटवीन द सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच गिव्स यू द अपीयरेंस ऑफ मल्टीटास्किंग। ये एक्चुअली अलग-अलग थ्रेड्स पे काम नहीं कर रहा तुम्हारा प्रोसेसर। A thread is an abstraction that you can use when writing code to determine which path of execution each instruction should go. जैसे तुम्हें एक थ्रेड से तुम्हें एक और हेल्प मिल रही है कि यू नो एन ऑर्डर, लाइक यू नो कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद इस इंस्ट्रक्शन पे जाना है, so you can determine which path of execution each instruction should go. um and working with threads other than the main thread, क्योंकि main thread के अलावा जो भी एडिशनली थ्रेड्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लाइक यू कैन डाउनलोड इमेजेस व्हाइल in the background. You can download images in the background with an additional thread, while जो main thread है, which is your UI thread, it is keeping your user interface responsive. तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं concurrency, और this code is concurrent code and this concept is concurrency. So let's see. hmm. अभी तक हमने सिंगल पाथ बनाए, ठीक है? देखो सिंगल पाथ ऐसे, एक, दूसरा, तीसरा। जैसे पहला टास्क जब तक खत्म नहीं हुआ है, तब तक टास्क तो शुरू नहीं हुआ है, राइट?
एंड जब तक टास्क 2 खत्म नहीं हुआ तब तक टास्क 3 शुरू नहीं हुआ है। और जब तक टास्क 3 पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हारा ऐप खत्म नहीं हुआ है, ऑब्वियसली। तो कितना टाइम लग रहा है इसमें? 3 टाइम्स इट्स टेकिंग अबाउट अ, से अगर ये 3 टाइम्स ले रहा है, सो दिस इज़ अबाउट 1 एंड अ हाफ द ड्यूरेशन। मतलब अगर तुम कॉन्करेंसी से देखो तो टास्क 1 शुरू हुआ एंड इट्स एग्जीक्यूटिंग, बट इन द मिडल और बिफोर द मिडल ऑफ टास्क 1 you start doing task 2 because maybe task 1 needs to wait, or uh, for whatever reasons you तुम कॉन्करेंसी लगा रहे हो, यू हो सकता है तुम्हारा टास्क 1 बैकग्राउंड में जा रहा है, जैसे इसमें था पीछे कि इट्स अ टास्क ऑफ डाउनलोडिंग इमेजेस, तो वो चीज़ बैकग्राउंड में हो सकती है, राइट? तो जब तक मेरा टास्क 1 के बीच में मैंने इसको स्टॉप नहीं किया मेरा टास्क 1 को, इट्स जस्ट मैं साइमल्टेनियसली टास्क 2 भी रन करना शुरू कर दूँगी। बिकॉज़ मेबी इस ड्यूरेशन के लिए मुझे इतना रिसोर्सेज़ नहीं चाहिए, बस इतने चाहिए कि मैं इतने रिसोर्सेज़ हैं, मतलब कि मैं इसमें और इसके आधे टाइम में बाँट सकूँ। So, task 1 and then in the middle you start doing task 2 and then task 1 खत्म हो चुका है, task 2 अभी भी एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। सो अब ये जो रिसोर्सेज़ यहाँ-यहाँ बँटे हुए थे, अब वो रिसोर्सेज़ इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे वो रिसोर्सेज़ कंप्लीटली टास्क 2 के पास है एंड मेबी इस पॉइंट ऑनवर्ड से उतने सारे रिसोर्सेज़ टास्क 2 को नहीं चाहिए। So, from this point, the resources are divided again between task 3 and task 2 and then task 3 completes its whole duration. तो तुम्हारा टाइम कितना ज़्यादा कम हो गया from here to like this is a lot of time in an actual app. ये तो बस इतना सा 3 टास्क है। In an actual app, just this much, it's not just this much time that would be left. It would be a whole lot more time than this much. That's why concurrency is a good idea, a good practice to use. Mm, जैसे तुम्हारा ऐप कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, इट्स इम्पोर्टेंट कि तुम्हारा कोड नॉन ब्लॉकिंग रहे। सो दिस इज अ नॉन ब्लॉकिंग कोड, दिस इज अ ब्लॉकिंग कोड, ये वाला ब्लॉकिंग है, ये वाला नॉन ब्लॉकिंग कोड है। ये क्योंकि ये जो है ये ब्लॉक कर रहा है, ये टास्क 2 को ब्लॉक कर रहा है जब तक टास्क 1 खत्म नहीं हो जाता है। सिमिलरली टास्क 3 को ब्लॉक कर रहा है जब तक टास्क 1 और टास्क 2 भी पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाता है। This means that performing a long running task such as a network request won't stop the execution of other things in your app. मतलब suppose करो task 1 है that you need to request something from the server. So it will take a lot of time. Obviously, it's not like a button. कि तुमने button click किया and it happens. It's something that takes a little more time than just a button clicking. Something like a network request or something requesting something from the server. तो ऐसे केस में मैं नहीं चाहती कि मेरा ऐप सारे रिसोर्सेज उसको दे दे और एकदम ब्लॉक हो जाए बाकी सब टास्क के लिए जब तक नेटवर्क के सर्वर रिस्पॉन्ड ना करे। आई डोंट वांट दैट बिकॉज दैट्स अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एज वेल एज टाइम। सो इस केस में क्या होगा, इट्स नॉट स्टॉपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क 2 until task 1 is completed, right? So लेकिन अगर तुम इसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट ना करो, अगर तुम ये कॉन्करेंसी अच्छे से इम्प्लीमेंट ना करो, इट्स इक्वली हार्मफुल। इट कैन मेक योर ऐप अपीयर अनरिस्पॉन्सिव टू यूजर, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ये वाली चीज। इसने यूज कर ये कॉन्करेंसी एंड एवरीथिंग, बट सी इट्स वेरी जंपी यहाँ पे। डू यू सी व्हाट हैपेंड? इट्स वेरी जंपी द स्क्रोलिंग। So implementing concurrency wrongly or not properly can make your app appear unresponsive to users. So, hmm, let's see. A thread is the smallest unit of code which can be scheduled and run in the confines of a program. This is just for theory. ये हो सकता है क्विज में क्वेश्चन हो that which is the smallest unit of code which can be scheduled and run within a program. So it's a thread. ये concurrent thread है, तो सॉरी concurrent code है एंड इसने lambda function लगाया है। So lambda function हम पहले कवर कर चुके हैं। It's when you don't define a whole function. So that's lambda. Function main val thread, then you printing thread dot current thread, ये this is a lambda function, has run, ठीक है, and then thread start. तो ये थ्रेड तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाए जब तक हमारा फंक्शन थ्रेड डॉट स्टार्ट पे नहीं पहुंचता है,
ठीक है? And then if you run it, you see thread 05 main has run. uh, यहाँ पे जो val thread equal to thread println है, तुम सोचो कि println तो ये प्रिंट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये println बस एक थ्रेड ये एक वेरिएबल है थ्रेड, उसके अंदर ये असाइन कर दिया। दिस इज अ लैम्डा फंक्शन। soul is a lambda function, sorry, not just this, soul is a lambda function। um lambda function में क्या होता है? फंक्शन की बॉडी, ये मेरे फंक्शन की बॉडी दैट यू वांट टू प्रिंट दिस होल थिंग, एंड ऊपर पे इट डजंट हैव arguments, so this function and then this function body thread dot start। so ये print ln इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। ये print ln वाली स्टेटमेंट एक ऐसे फंक्शन के अंदर है जो फंक्शन एक वेरिएबल के अंदर है, राइट? तो सिर्फ वेरिएबल मैं प्रिंट एलन थ्रेड करती, व्हिच इट्स नॉट करेक्ट सिंटैक्स, बट जस्ट टू एक्सप्लेन, अगर मैं प्रिंट करती थ्रेड को, मतलब मैं वेरिएबल को प्रिंट करती, तब मेरी प्रिंट एलन स्टेटमेंट प्रिंट होती, राइट? तो यहाँ पे प्रिंट एलन इज इनसाइड दिस, सो इट्स नॉट एग्जीक्यूटिंग। ये थ्रेड तभी का स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूट होता है जब थ्रेड डॉट स्टार्ट फंक्शन कॉल करते हो तुम। तो अगर तुम इसे रन करोगे, यू विल सी थ्रेड 05 मेन। ये 05 क्या है? करंट थ्रेड जो होता है, ये फंक्शन करंट थ्रेड, इट रिटर्न्स एक पहले तो कन्वर्ट करेगा थ्रेड को इनटू अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, और ये रिटर्न कर रहा है थ्रेड का नाम, दिस थ्रेड, एंड सॉरी, इट्स रिटर्निंग नेम, प्रायोरिटी एंड थ्रेड ग्रुप। सॉरी, ये है नेम प्रायोरिटी एंड द थ्रेड ग्रुप। सो ये मेन फंक्शन का है, and it has 0 which is the name of the thread, and 5 which is priority and has run। अगर इसे रन करके देखते हैं, ओके, इसमें भी यही आ रहा है, बट उसपे तुम करो तो अलग आए मे बी। रनिंग मल्टीपल थ्रेड्स, तो फिर अगर जैसे मल्टीपल, ये तो एक थ्रेड था, सपोज तुमने वैल स्टेट्स, दिस इज एन एरे जो स्टेट्स वेरिएबल में स्टोर्ड है, यू वांट टू रिपीट दिस होल कोड 3 टाइम्स। इसमें तुम क्या कर रहे हो? प्रिंट थ्रेड में यू वांट टू प्रिंट दिस फंक्शन, सेम थिंग, एंड तुम एक फॉर लूप लगा रहे हो फॉर आई इन स्टेट्स। I want to print the thread dot current thread and dollar I, मतलब कि I in states, तो जो भी I की वैल्यू होगी in the for loop वो भी प्रिंट होगी साथ में, and then thread dot sleep for 50 milliseconds। uh, and इस पूरे पे इसने डॉट स्टार्ट लगा दिया सीधा ही, इंस्टेड ऑफ दिस फंक्शन इसने सीधा इस पूरे पे स्टार्ट लगा दिया। तो जब ये यहाँ पढ़ेगा तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब मेरा कंपाइलर इस लाइन को पढ़ेगा डॉट स्टार्ट, इट विल एग्जीक्यूट द थ्रेड। तो इसका ऑर्डर क्या आ रहा है? Thread 25 main has started, then so ये बहुत बड़ा है, so doing task, ending thread, then has starting। uh, so ये हमें प्लेग्राउंड में मिलेगा, अभी देखते हैं। एक्चुअली एंड्रॉइड स्टूडियो में अलग आउटपुट आएगा। सी हम्म तो I in states has started, then it's has starting, doing task one, 1 2 2, ending thread। uh, अगर तुम एक्चुअली इसमें देखोगे, ये तो इसमें प्लेग्राउंड पे आएगा, तुम एक्चुअली एंड्रॉइड स्टूडियो में चला के देखोगे, यू विल सी कि 3 थ्रेड्स है, 0 1 2 स्टार्टेड, ठीक है, बिकॉज इट्स रिपीटिंग 3 टाइम्स, राइट? 3 बार थ्रेड क्रिएट हो रहा है। Has starting, doing task 1 3 times, doing task 2 3 times, and then all the three are ending, all 3 tasks are ending। हाँ, तो अभी ये जिसने आउटपुट लगाया है, इसमें तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, राइट? स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग, देन टास्क 1 टास्क 2 एंडिंग, सारे थ्रेड्स का सेम ऑर्डर में, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि जब तुम कोड रन करोगे एंड्रॉइड स्टूडियो में, तब तुम्हारा जैसे ऐसा आउटपुट ना आए, कोई ऊपर नीचे आ जाए इनमें से लाइनें,
दैट्स ऑल्सो फाइन क्योंकि थ्रेड्स जो है यू कैन नेवर प्रिडिक्ट कि वो किस ऑर्डर में तुम्हारे पास प्रिंट होंगे. समटाइम्स द थ्रेड्स विल अपीयर टू रन इन सीक्वेंस, another times the content will be interspersed. uh, uh, interspersed, हाँ, तो फिर दैट मीन्स कि ये जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में या फिर इन जनरल इन ऑर्डर तुम्हारे पास थ्रेड का एग्जीक्यूशन प्रिंट हो या इन इन ऑर्डर एग्जीक्यूट हो तुम्हारे थ्रेड्स. So threads seem like a very simple way, right, to do concurrency and to do multiple tasks. But there are a lot of problem with threads. First, uh, would be that it requires a lot of resources. Now, creating, switching, and managing threads, they take up a lot of system resources and time limiting the raw number of threads that can be managed at the same time. माने कि जब तुम एक थ्रेड को क्रिएट करने में या से या थ्री थ्रेड स्विचिंग बिटवीन देम एंड मैनेजिंग द थ्रेड्स, कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा, इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज. एंड जो तुम्हारे रॉ नंबर ऑफ थ्रेड्स है, मतलब कि जो थ्रेड्स अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, दोज रॉ थ्रेड्स, इनको भी मैनेज करने में it time limits the raw number of threads that can be managed at the same time. तो uh, अगर तुम ऑलरेडी बने हुए थ्रेड्स है उन्हीं को क्रिएट स्विच और मैनेज करने में, जो तुम्हारे पास रॉ थ्रेड है जो अब तक एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, उनको ही उनके लिए बहुत कम टाइम छोड़ देता है. टाइम लिमिट उनके लिए बहुत कम टाइम छोड़ देता है टू बी मैनेज्ड और at the same time. And the cost of creation can really add up because it's not just one single thread. Now it's a lot of threads in your program, and all these threads are stopping, resuming, and they're not executing in the same order. So the cost of this creation can really add up. um, हर रनिंग ऐप में मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं एंड एक डेडिकेटेड थ्रेड होगा स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एप्स यूआई. सो मोस्टली इट्स द मेन थ्रेड, ठीक है, बट लाइक आई सेड देयर आर चांसेस कि इन सम केसेस द यूआई थ्रेड एंड द मेन थ्रेड मे बी डिफरेंट. So let's we just going for cases where main thread is the same as UI thread. तो एक जो डेडिकेटेड थ्रेड होता है which is responsible for the app's UI, it's called the main thread or the UI thread, most oftenly. Now because it's responsible, it's because it's responsible for it's the main thread responsible for your app's UI. It's important कि इस कि कोई भी चीज को ब्लॉक ना करे. तो अगर कोई लॉन्ग रनिंग टास्क होगा जैसे कि नेटवर्क रिक्वेस्ट, वो ब्लॉक कर देगी अंटिल पूरी कंप्लीट नहीं होती है. मतलब until your say डोंट से नेटवर्क रिक्वेस्ट से डाउनलोडिंग इमेजेस, जो अभी हमने बिफोर यू बिगिन पे ऐप देखा था, वहां पे देयर वर इमेजेस जो आर बीइंग डाउनलोडेड एंड देन instantly it was they were being downloaded and then you were scrolling. So अगर ऐसा केस है उसमें तो जल्दी जल्दी प्रिंट हो गया, जल्दी जल्दी डाउनलोड हो गए. से किसी का इंटरनेट स्लो है या देयर कैन बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. हो सकता है कि डाउनलोड करने में टाइम दे रहा है, कोई इमेज डाउनलोड करने में ज्यादा टाइम लगा रही है, किसी का इंटरनेट स्लो है. There can be a lot of problems, even a simple thing like downloading images from the internet. तो कोई अगर लॉन्ग रनिंग टास्क है लाइक डाउनलोडिंग इमेजेस और नेटवर्क रिक्वेस्ट, तो वो तुम्हारी ऐप को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा until it's properly completed. तो इससे तुम्हारा ऐप अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, राइट? योर ऐप becomes unresponsive and it closes. तो ये ना करने के लिए जो करेंटली तुम्हारे हाथ में फोन है, they are uh, they do a lot of attempt to keep the operating system in them. It does a lot of attempt to keep things responsive for the user. जो currently phones हम use करते हैं, they attempt to update the UI 60 to 120 times per second. Uh, that's very fast, right? 60 is even 60 is at minimum. It's they're updating the UI 60 times per second. एक second तो ऐसे निकल जाता है. So the operating system is working really hard and the UI is updating very, very fast. And like in the blink of an eye, it's updating 60 times. Um, and there's a very short time. अगर इतनी जल्दी जल्दी UI update हो रहा है, there's a very short and finite time, right, to prepare and draw that UI on the screen. So every screen update
ideally should take 16 milliseconds or less. um, जैसे कि तुम अपने phone पे हो and suddenly you drag your notification bar down so that your screen updating. It has to take 16 milliseconds or less. Android will drop frames or a bot trying to complete a single update cycle in attempt to catch up. ऐसा हो सकता है कि तुम अगर ये करते हो कि तुम अपना नोटिफिकेशन बार नीचे करते हो, तो ऐसे ऐसे कभी कभी हो जाता है, राइट? तुम्हारा फोन एकदम से हैंग हो जाता है एंड एवरीथिंग नथिंग इज रिस्पॉन्डिंग, से तुम्हारा नोटिफिकेशन बार भी आधे में अटक जाते हैं, योर फोन स्टॉप रिस्पॉन्डिंग. So how is that? Why is that happening? Android starts dropping frames or bots trying to complete one single update cycle in order to catch up. कि suddenly उसको अब एक बार नीचे करना है. It has to update the screen, update the UI. UI भी completely different in notification bar का than say अब तुम YouTube पर session देख रहे हो. So some frames drop and fluctuation is normal, but too many will make your app unresponsive. Okay, so what's race conditions and unpredictable behavior? Now, a thread is like an abstract concept for how the processor appears to handle multiple tasks at once. अगर जैसे तुम्हारा प्रोसेसर है वो स्विच कर रहा है बिटवीन डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ऑन डिफरेंट थ्रेड, एक थ्रेड पे नहीं, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड, तीसरे थ्रेड, डिफरेंट सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, देन एक एग्जैक्ट टाइम जब तुम्हारा थ्रेड एग्जीक्यूट होगा और कब तुम्हारा थ्रेड पॉज होगा, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थ्रेड्स. इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू कंट्रोल इट. तो तुम हमेशा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आउटपुट जब तुम थ्रेड्स के साथ काम कर रहे हो. जैसे कि ये वाला कोड है. हम्म, इसमें देखो, count 0 for I is ranging from 1 to 50, and thread count plus equal to 1, print thread, it's also printing the thread count and it's also printing the count, and then start. तो ये क्या है? ये basically हर it's running the loop for 50 times and हर बार count भी बढ़ रहा है and thread भी बढ़ रहा है. ठीक है, हर ये लूप मुझे 50 बार चलाना है और हर 50 बारी में मेरा काउंट भी +1 हो रहा है, काउंट की वैल्यू भी +1 हो रही है और थ्रेड तो बढ़ ही रहा है. This is a simple loop to count from 1 to 50, and every time you count from 1 to 50, a new thread is created for each time the count is incremented. ठीक है, ये ऐप. Then अगर तुम इसे run करोगे, you'll see thread 50 count 49, then thread 43 count 50. So this is very strange कि पहली में you reach thread 50 and the count is 49. अब तुमने शुरू किया है, right? And then the second say कि thread 43 count 50. अभी अगर count 49 है and count 50 हो गया, लेकिन thread 50 से 43 हो गया. Then you go to thread 1 count 1. So this is a very confusing loop. बीच में यहाँ पे देखो, ये सारा काउंट बढ़ा ही नहीं, काउंट 41 का 41 है इस पूरे में एंड देन थ्रेड्स चेंज हो रहे हैं बार-बार, राइट? कहीं-कहीं भी मैच कर रहा है. थ्रेड 23 काउंट 22 मैच भी नहीं कर रहा है. यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ भी नहीं कर रहा है, राइट? तो इस कोड को देख के तो मुझे लगा कि लास्ट जो थ्रेड है, last thread is executed first, right? इस कोड को देख के that's what you'll think, and that some of the other threads were executed out of order. Um, कुछ इटरेशन लाइक आई सेड यहाँ पे तुम देखोगे काउंट सब में सेम है 41 and then the threads are changing after multiple threads. um the count remains same, sorry. uh and then ऊपर first line में you saw that the count reaches 50 at thread 43, even though it's just a second output, it's a second thing. यहाँ पे count already 50 हो गया, right? तो ideally तुम्हारा function यहाँ stop हो जाना चाहिए था because it's running till 50, and then start with thread 1 count 1, and also thread 43 पे 50 आ गया. So um, it's impossible to know कि final value count की क्या होगी इस पूरे output से, right? This is why कि one way threads can lead to an unpredictable behavior. So अगर तुम multiple threads के साथ काम कर रहे हो, you might run into what's called a race condition. ये तो बस एक thread था मेरा. मतलब एक थ्रेड कैन लीड टू एक थ्रेड ही तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर दे रहा है. तो अगर तुम मल्टीपल के साथ काम कर रहे हो, यू माइट रन इनटू समथिंग कॉल्ड रेस कंडीशन. ये तब होता है जब मल्टीपल थ्रेड्स ट्राई टू एक्सेस द सेम वैल्यू इन मेमोरी एट द सेम टाइम. माने
कि जैसे ये था, दिस इज नॉट अ सिंगल थ्रेड थिंग। एवरी टाइम अ थ्रेड इज इन एवरी टाइम अ न्यू थ्रेड इज क्रिएटेड, है ना? तो इसमें तुम एक थ्रेड से काम नहीं कर रहे, तुम 50 थ्रेड से काम कर रहे हो। अगर ये कह रहे हैं कि एक थ्रेड में कितना, एक वन वे थ्रेड में अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है, ये तो 50 थ्रेड्स है, एंड 50 थ्रेड्स में ऑल 50 ऑफ देम आर ट्राइंग टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ काउंट, राइट? So, at the same time, so multiple threads are trying to access the same value in memory at the same time. So race condition is उस केस में you want to race condition, मतलब very obviously it's a race condition. So कौन सा thread, it's a race between threads to access that value first. Um, the race condition can result in a hard to reproduce random looking bugs, and which may cause your app to crash, often very unpredictably. So ये सारी चीज़ें, रेस कंडीशंस एंड हार्ड टू रिप्रोड्यूस, बग्स, परफॉर्मेंस इश्यूज, इन सब की वजह से they don't recommend working with threads directly. Instead, you learn coroutines. तो तुम्हें इम्प्लीमेंट क्या करना है? Concurrent code. So concurrent code is not bad. Like the problem is not with concurrency. Concurrency is a very nice concept that they're giving you कि तुम्हारा time बचा, resources बच रहे हैं. The way of doing it is wrong. The way of doing it is not very efficient. Threads is not very efficient. So the concept is the same. I want to implement concurrency, but instead I will use something called coroutines than threads to achieve that. Okay, so um, coroutines offer a more flexible and easier way to manage concurrency. Concurrency enables multitasking, जो कि threads पे करे थे, so that's what you want, multitasking. But they provide another level of abstraction over simply working with threads. One key feature is that they have the ability to store state so that they can be halted and resumed. A thread में कहीं पे भी store नहीं हो रहा है, so just thread is very random. Coroutines में इट हैज़ द एबिलिटी कि तुम स्टोर कर सकते हो कि स्टेट, जिस स्टेट पे तुम रोक रहे हो, जैसे जिस स्टेट पर टास्क 1 मेरा के रिसोर्सेज बटे हैं टास्क 2 में, या जिस पॉइंट पे वो पॉज हुआ है, जिस पॉइंट पे रिज्यूम हुआ है, एवरीथिंग द स्टेट्स कैन बी स्टोर्ड so that they can be halted or resumed. Now a coroutine may or may not execute. तो जरूरी नहीं है कि halt करने के बाद या मतलब resume करने के बाद, it's not necessary that every coroutine has to execute. It may or may not execute. Now the state, जो भी state है तुम्हारे coroutine की, it's called continuations. It allows portions of code to signal when they need to hand over control or wait for another coroutine to complete its task before resuming. So continuation, which is your state, वो basically क्या कर रहा है, तुम्हारे code को some portions, जैसे some function or some portions of your code signal कि कोड इस तरह से लिखो with coroutines कि it's used to signal your processor कि इस पॉइंट पे I need to hand over the control, or maybe I need to wait कि एक और coroutine is implementing and I need the value of that. So wait till that coroutine implements and get the value and then resume, or maybe wait for another coroutine to complete before resuming, and maybe at that point hand over control कि यहाँ पे I have to stop and hand it over to some other coroutine. So this flow is called cooperative multitasking. It's still multitasking, except here it's cooperative, right? They're pausing, the coroutines, they're pausing, or they're waiting, they're handing it over. It's cooperative multitasking. Um, in addition to continuation, which is the ability to the store, like continuations is basically helping you store state. It's the state. So it helps you store states. Now, in addition to continuations, creating a coroutine encompasses that work in a job. मतलब कि continuation state. तो other than that, जो भी coroutine तुम create कर रहे हो, उसका काम is is compiled and put into encompasses, मतलब कि um, उस coroutine का जितना भी काम है, उस सबको तुम contain कर रहे हो in something called a job. It's a cancelable unit of work. Cancelable because the coroutine may or may not execute. It's a cancelable unit of work with a life cycle.
It has a life cycle. It's a stop, halt, resume, pause, all of that. Started, destroyed. It has with a life cycle inside a coroutine scope. coroutine scope के अंदर एक job है and coroutine scope um, is is a context that enforces cancellation and other rules to its children and their children recursively. So recursively means बार बार. So coroutine scope क्या हुआ? It's like a ऐसे समझो कि coroutine तुमने कभी वो वाली गेम देखी होगी अपने बचपन में of course something called a box inside a box. So which is basically like you have a big box, and then there's a slightly smaller box, and then there's a slightly smaller box in there till you reach the end where there's a small small box or something empty. So ऐसे छोटा 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 करके boxes होते हैं ऐसे box या different shape. Uh, it's a showpiece or a game. Most of you must have seen. So ऐसे करो कि ऐसे imagine करो कि कोरोटीन स्कोप जो है इट्स लाइक दैट बिग बॉक्स एंड जो भी तुम कोरोटीन स्कोप पे इम्प्लीमेंट करे हो उस कोरोटीन स्कोप के अंदर जो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है वो सिर्फ उसके एक लेयर नीचे पे नहीं होगा अ, वो सारा उसके चिल्ड्रन एंड मतलब उसके अंदर के सारे बॉक्सेस पे होगा सो कोरोटीन स्कोप इज अ कॉन्टेक्स्ट which enforces cancellation and other rules, not just cancellation. Whatever rules you want to apply to a coroutine, it will apply all that to its children and then their children recursively. The same process keeps happening. So बड़ी वाली लेट पे तुमने जो भी लगाया से बड़ी रेक्टेंगल बॉक्स पे तुमने जो भी लगाया वो उसके अंदर के सारे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस पे टिल द वेरी एंड सबसे छोटा वाला बॉक्स सब पे वो सारे कैंसिलेशन एंड अदर रूल्स आर इम्प्लाइंग देन ये जो जॉब होता है इट्स कंटेन्ड इनसाइड दिस कोरोटीन स्कोप तो ये छोटा वाला बॉक्स हो गया जॉब it's a cancelable unit of work it has a life cycle so तीन चीजें हमने अब पढ़ी continuation is the state of the coroutine a job whatever creating a whatever work the coroutine does sorry not whatever the coroutine does creating a code the work of creating a coroutine is in, is contained inside a job I I I might have said it wrong before. In case I said that um, कोरोटीन के कोरोटीन क्या काम करते हैं वो एक जॉब में होता है सॉरी दैट्स क्रिएटिंग अ कोरोटीन encompasses that work in a job so तभी इसका एक लाइफ साइकिल है I'm sorry जॉब का तभी एक लाइफ साइकिल है राइट बिकॉज जो creating that coroutine that work of the work of creating a coroutine that's contained inside a job so the first thing was continuation, which is the state of the coroutine. Then the second thing is job, which is creating a coroutine, the work of creating a coroutine. Then third thing is coroutine scope, which is a context जो सारे rules apply करता है to its children and their children recursively. Another term is dispatcher. Dispatcher क्या करता है? Dispatcher it manages कि कौन सा backing thread coroutine will use for its execution. Uh, thus removing the responsibility of when and where to use a new thread from the developer मतलब हमारी तरफ से हमें कोड नहीं लिखना है एंड इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग कि कहाँ पे थ्रेड यूज करना है और कब थ्रेड यूज करना है नया इंस्टेड डिस्पैचर मैनेज करता है कि कौन सा बैकएंड थ्रेड को रूटीन यूज करेगा फॉर इट्स एग्जीक्यूशन सो job a cancelable unit of work such as the one created with launch function अभी नीचे आएगा then coroutine scope functions used to create no, new coroutines such as launch and async ये दोनों functions नीचे आएंगे they extend from this coroutine scope then dispatcher it determines the thread the coroutine will use in taking it away from the developer responsibility the main dispatcher जो होता है it will always run coroutines on the main thread while other dispatchers like default IO or unconfined they will use other threads तो मेन वाला हमेशा coroutines रन करेगा on this main thread और default IO और कोई भी other dispatcher होगा तो वो other they use other threads one thing about dispatchers is
It avoids the performance cost of initializing new threads, other than taking the responsibility away from us. It also avoids the performance cost of initializing new threads, and that would be a very big cost because a lot of new threads have to be created for an app. So that's a very great performance cost. It's taking away from us. Um, okay. Uh, अभी जो हमने पीछे थ्रेड में किया था से ये जो हमने कोड लिखा था दिस इज यूजिंग थ्रेड्स राइट नाउ लेट्स यूज coroutines. So function main repeat this 3 times global scope dot launch function and then print hi from thread dot current thread uh, and call the current thread function and then we're printing this. So hi from ये डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर से हुआ है, डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर वर्कर 2 एड तो यहाँ पे देखो #2 5 in main, so 555 is the priority, then #2 #1 at the rate uh, at the rate coroutine #2 #1 #3 this is the name, and then the सारे main the name, and then all of these are coming from the main group, the main thread group. इसमें 3 coroutines यहाँ पे 3 बार हुआ है. So 3 coroutines are launched and are created in the global scope. So coroutine scopes थे ना, तो this is the global scope. It's a type of coroutine scope using the default dispatcher. Global scope क्या करता है? It allows any coroutines in it to run as long as your app is running. तो अलग-अलग तरह की coroutine scopes होते हैं. ये वाले का function क्या है? It allows any coroutines जो कि global scope के अंदर तुम डालोगे to run as long as your app is running. तो इस ये ग्लोबल स्कोप का भी एक डिसएडवांटेज है जो कि अभी हमने मेन थ्रेड से पढ़ा था, वही सेम डिसएडवांटेज ग्लोबल स्कोप का है कि इट हैज़ द सेम डिसएडवांटेज, तो वी वोंट बी इस एग्जांपल के लिए तो ये यूज़ कर रहा है ग्लोबल स्कोप, बट अदर देन दैट वी वोंट बी यूजिंग global scope. There are other coroutine scopes that you will use. So when you use coroutines in your app, you will use other scopes. नॉट दिस वन. जैसे कि मेन थ्रेड से मुझे यही प्रॉब्लम हुई थी राइट कि जब तक मेरा पहला वाला कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होता है मैं दूसरे वाले पे नहीं जा पा रही. सो एंड इट मेक्स योर यूआई अनरिस्पॉन्सिव. तो ग्लोबल्स को भी यही कर रहा है कि जितने भी को रूटीन्स उसके अंदर है अगर वो सारे ही अलाउ कर देगा रन करने को देन मेरा ऐप एक पॉइंट पे बाद अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा क्योंकि say same thing, suddenly you change the UI of your app, suddenly you want to go switch to another app, so the screen has to change very fast. It's a possibility कि हुँ, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा ऐप हैंग हो जाए बिकॉज़ इट्स इन दैट finite time of amount of time it has to do a lot of things. It has to change the UI and a lot of other things it has to do. तो वो फ्रीज़ हो सकता है एंड इट बिकम्स अनरिस्पॉन्सिव. तो जिस भी रीज़न के लिए हम मेन थ्रेड वाली प्रॉब्लम फेस करते हैं सेम प्रॉब्लम्स वी गेट इन ग्लोबल स्कोप. लॉन्च फंक्शन हमने पढ़ा अभी ऊपर. Launch function creates a coroutine from the enclosed code wrapped in a cancelable job object. तो लॉन्च फंक्शन क्या है? जो भी तुम कोड लिख रहे हो लॉन्च के अंदर, जैसे लॉन्च के अंदर ये जो लिखा है व्हाटएवर कोड यू राइट इन लॉन्च उससे एक कोरूटीन क्रिएट करता है, ठीक है? एंड इन अ कैंसलेबल जॉब ऑब्जेक्ट. सो लॉन्च इज यूज्ड एंड स्पेशली लॉन्च इज यूज्ड जब भी तुम्हें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए outside the confines of that particular coroutine. You don't need a return value. Then also you use the launch function. Launch fully ऐसे होता है. ये full signature है launch का. It has a context, it has a start and has a block. So block करने पे you want to suspend coroutine scope and then go back to unit. ठीक है? What the function I want is to the function body is unit. ये भी एक तरह का lambda function ही है ये पूरा. Okay. So
जो भी ब्लॉक ऑफ कोड हम वी वांट to be blocked, we write it with suspend. So सस्पेक्ट क्या करता है, सस्पेंड क्या करता है, सस्पेंड सिग्नल कर रहा है कि ये वाला ब्लॉक और कोड ऑफ फंक्शन कैन बी paused or resumed right now, can be paused or resumed at that moment, at that particular line. Then run blocking. रन ब्लॉकिंग, तो इट्स क्या करता है, इट स्टार्ट्स न्यू कोरूटीन, और जो भी करंट थ्रेड चल रहा है अभी उसको ब्लॉक कर देता है अंटिल इट्स टाइम ऑफ कंप्लीशन। मतलब कि जिस भी पॉइंट पे अभी वो है उस पे स्टॉप कर देगा, एंड देन उस जिस पॉइंट पे उसने स्टॉप किया है एंड जिस पॉइंट पे वो कंप्लीट होगा दैट टाइम इज लेफ्ट। So it starts a new coroutine and blocks the current one until completion. Until completion माने ये जो नया coroutine है ना, जब तक ये complete नहीं होता है तब तक वो current thread को नहीं allow करेगा. So it's mainly used between blocking and unblocking, used to bridge between blocking and non-blocking code. इस पूरे कोड में let's go into certain things. जैसे यहाँ पे get value, this function get value. Get value क्या कर रहा है, it's returning a random number after a set delay time. So delaying for 3000 milliseconds and then you're printing a random number. And then it's using a date time formatter. ये जो है time, it's using this date time formatter. तो अगर इसे रन करते हैं, अच्छा इस it let's try running in this. तो जैसे इसके अलग है एंड यू कैन सी कि यहाँ पे अलग है। तो ये क्या कर रहा है, इट्स रिटर्निंग अ रैंडम वैल्यू, ठीक है, 3000 मिलीसेकंड्स के बाद, देन इट्स यूजिंग टाइम से डेट टाइम फॉर्मेटर, एंट्री सो ये जो है ये आउटपुट प्रिंट कर रहा है मेरे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। सो एंट्री एट से this time, and then you're leaving at value at this time, then you entering again, that you're leaving again. So first you enter, then you're delaying it. इसने 2 बार कॉल किया num1 num2, ठीक है, तो पहले तुमने num1 से कॉल किया तो तो पहले तुमने num1 से कॉल किया, so it goes into get value function, it's entering, हमने प्रिंट करवा दिया in a date time format. So entering get value function, then you delay for 3000 seconds and then you leave the get value function, ठीक है, ऐसे हमने 2 बार किया, एंड फाइनली हमने num1 और num2 को का सम इक्वल करके प्रिंट करवा दिया। It calls the get value function twice, num1 num2, and then returns the sum. Turn math dot random. So एक रैंडम नंबर रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन इज जस्ट रिटर्निंग अ रैंडम नंबर। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे था 1.4320, लेट्स सी, यहाँ पे पहले एंटर हुआ 10 पे 1024 10093, फिर इस टाइम पे एग्जिट हुआ, फिर ये इस टाइम पे एंटर हुआ, लाइक 1 second आफ्टर दिस, वन नॉट सेकंड, दिस इज स्मॉलर देन सेकंड, इस पे एंटर हुआ, देन इस पे लीव हुआ, एंड then sum is this 1.162. It's different from this. It's the random function. uh, mm, mm, mm. अच्छा, अगर हम it's asking me to replace and do it with run blocking, ठीक है, do run blocking, let's do async function. Okay, तो अब मेरा अलग है, so now the sum is different, the entry and exit points are different now, it's entering after, it's not the same time, second time it's entering, it takes more time, and then to
some seconds में ही वापस आ रहा है बाहर ये। Then now my sum is different. इस केस में पहले वाले केस में पहले वाले केस यहाँ पे जाते हैं। पहले वाले केस में मैंने 2 बार कॉल किया है एंड जब तक मेरा दूसरा वाला एग्ज़िट नहीं हुआ है, तब तक मेरा पहला वाला एंटर नहीं सॉरी जब तक पहला वाला एग्ज़िट नहीं हुआ है, तब तक दूसरा वाला एंटर नहीं हुआ है। दैट्स व्हाट हैपेंड राइट? उसको फिर से प्रिंट एक अलग उसमें प्रिंट दिखती है वो। ओके, सो 2 to 4, 23. Okay, it's 593, 603 and then 603 and then see 604. तो जब तक मेरा पहले वाला लीव नहीं हुआ है, लीविंग एट वैल्यू, तब तक उसके बाद ही दूसरा वाला एंटर हुआ है, राइट? विद रन ब्लॉकिंग। नाउ लेट्स डू async फंक्शन। अगर तुमने async फंक्शन लगाया, तो उससे इट डज़ नॉट मैटर कि पहले वाला एग्ज़िट हुआ है कि नहीं हुआ है। नीचे जाते हैं। The two calls to the get value are independent and they don't necessarily need the coroutine to suspend. I don't need कि मेरा पहले वाला coroutine suspend हो जाए तभी दूसरा वाला रन करेगा. So these two calls are independent because I've used the async function. अगर async function का signature पूरा खोल के देखेंगे, it is the same as launch. ये पूरा code launch जितना same है. Then why the difference? Because of this deferred T. Async जैसे launch जो है वो कोई भी return value नहीं दे रहा है, right? Async function return value देता है of type defer. डेफर्ड क्या है? डेफर्ड इज़ अ कैंसलेबल जॉब जो कि एक रेफरेंस स्टोर कर रहा है टू अ फ्यूचर वैल्यू। मतलब कि डेफर्ड एक प्लेस होल्डर टाइप का हो गया। मतलब इस तुम इट्स लाइक अ प्लेस होल्डर कि फ्यूचर में इसको एक वैल्यू आएगी। जब तुम फॉर्म भरते हो, यू सी अ प्लेस होल्डर राइट? एंटर योर देयर इज़ अ फील्ड, एंटर योर नेम एंड देन जहाँ पे तुम नेम एंटर कर सकते हो, वहाँ पे यू सी एंटर योर नेम इन ग्रे, नेम और समथिंग इन ग्रे। इट्स लाइक अ प्लेस होल्डर। जब तक तुम उसमें कुछ डालोगे नहीं, तब तक वहाँ पे वो ग्रे-ग्रे लिखा आएगा। So that's a placeholder. Um, it can hold a reference to a future value by using a deferred. You can still call a function as if it immediately returns a value. मतलब ऐसे नहीं है कि just because it's referencing to a future value which is not put yet, तो मैं इसको immediately return नहीं करवा सकती. You can call the function. You can still call the function as if it is immediately returning a value. Therefore, just served as a placeholder since you can't be certain when an asynchronous task will return. जैसे यहाँ पे इस वाले में सॉरी ये था ना asynchronous, हाँ। सो यहाँ पे अभी तो ये है, ऐसा नहीं कि अगली बार इतने ही सेकंड के बाद होगा। सो asynchronous में asynchronous you cannot determine when a certain task will return. अगर मैं इसी कोड को फिर से रन करती हूँ asynchronous में, तो मेरे पास एक अलग आउटपुट आएगा एंड इट्स you cannot be certain. See, now it's completely different. It didn't take the thing, it didn't even take the same uh time. So it's कहाँ पे थे हम? You can't be certain when an asynchronous task will return. तो इसलिए हम एक प्लेस होल्डर डाल रहे हैं because we know for sure that some value will come at one point. This has to come out of the function, right? So we know that some value will be put inside it. We just don't know what value for right now. So that's why deferred. A deferred uh, in some other language it's called promise or a future. It guarantees that a value will be returned to this object at a later time. Uh, तो अगर डेफर्ड नहीं लगाते इससे एसिंक्रोनस टास्क क्या होता है? इट्स बेसिकली इट विल नॉट ब्लॉक, ठीक है? वो किसी भी फंक्शन को ब्लॉक नहीं करेगा और इट विल नॉट वेट फॉर एग्जीक्यूशन। बाय डिफॉल्ट वो नहीं करेगा। टू इनिशियलाइज कि हम टू से टू द प्रोग्राम that you want this particular line of code to wait for a certain output. We're calling deferred क्योंकि by default it won't block or wait for execution. Asynchronous one.
So you also use something called await to initiate that the current line or output needs current code needs to wait for the output of a certain deferred. You call this await function, which will return the raw value. When to mark function as suspend? So इसमें गेट वैल्यू फंक्शन में भी सस्पेंड है. सी हियर इस गेट वैल्यू के आगे भी सस्पेंड लगा है. तो व्हेन डू यू नो कि कब सस्पेंड करना है कि नहीं करना है? In this certain case में get value also has a it's also defined from the suspend keyword. Why? Because it calls a delay function, delay of 3000 milliseconds, which is also a suspend function. तो जब भी कोई फंक्शन एक सस्पेंड फंक्शन को कॉल कर रहा है, देन इट शुड आल्सो बी अ सस्पेंड फंक्शन. जैसे डिले यू नो इज अ सस्पेंड फंक्शन, देन बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन इससे कॉल कर रहा है, इट शुड आल्सो बी अ सस्पेंड फंक्शन. So whenever a function which calls another suspend function, then it should also be a suspend function. In this case, um, अच्छा, so you might wonder कि main क्यों नहीं है? Because main is calling async, right? And it's also calling get value. यहाँ पे, sorry, get value is calling, no, this is the code. Not async, it's calling get value. Main अगर get value call करे, and we for sure know that get value is suspend because you initialize with the keyword. तो main क्यों नहीं है? It's because कि get value जो function है, it is not actually called in main. It is called in a function which is passed in run blocking. Run blocking now is also a suspend function. uh, जैसे कि launch और async में पास हुए हैं. लेकिन get value directly main में नहीं कॉल हुआ है. uh, sorry, एक second. Get value is actually called in the function passed on into run blocking. Uh, mm, 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 mm. Get value is called in a function which is passed in run blocking. Okay. Uh, which is a suspend function similar to one's. Sorry, run blocking is not suspend. What we've called here, that's suspend. What this line says is कि get value actually call हुआ है in some function which is passed in run blocking, and that function which is passed is also a suspend function like launch and async. However, जो get value है, get value और ये run blocking, these are actually not suspend functions. इसलिए main को हमने suspend से mark नहीं किया है. अगर एक function suspend function में call नहीं करता है, then it doesn't really have to be a suspend function itself. Okay, so यहाँ पे um, I'm sorry, I was looking at the wrong code, that's why I got confused. We had to look at this code. Run blocking is calling an async function which is calling get value. ठीक है, function main directly get value को call नहीं कर रहा है. Main run blocking call कर रहा है, which is not suspend. Now run blocking is calling async, which is suspend, and async is calling a get value, which is not necessarily suspend. अभी ऊपर suspend है, ठीक है, because it's calling a delay, but get value अगर normally इसमें कुछ और code लिखा था, तो by default suspend नहीं होता. Is in this case it is suspend क्योंकि हमने delay call किया है. So this is suspend, now this is suspend. However ये दोनों suspend run blocking call कर रहा है. So main doesn't have to be suspend function. Mm. हाँ, so get value function all suspend. It's not called in main, and nor is run blocking a suspend function. So दो reasons जिसकी वजह से main suspend नहीं है. First get value call नहीं हुआ है. वो run blocking, वो async function में call हुआ है, in fact not even run blocking, it's called an async. And दूसरा run blocking call हुआ main से, which is not a suspend function. Okay. Mm, okay, so इसने यहाँ पे एक code दिया है, and it's asking you to rewrite it using coroutines. All right. So it has val states an array,
and then I want this code to repeat three times. For I in states, I want this is the function should be printed, and then I want a sleep of 50 milliseconds. Okay, so ये वाला part same है. I want this to repeat for three times. इसने इस code में भी global scope लिया है, but don't use global scope in your codes. Global scope ये बस example समझाने के लिए क्या है. Global scope I'm using launch function here. Then this was the function. Sorry, this was the function that you wanted, right? यहाँ से this was the function, and I also want a print statement. Every time the thread is created, repeat for three times. इसका मतलब है create a thread. So coroutine से repeat three times global scope dot launch. It has everything has to be within a coroutine scope, right? So global scope, then launch, and this is the print statement I needed first. Then the loop is same for in states, print this, and then the thread sleep. So for I in states, print this. Thread dot sleep नहीं होगा, delay होगा for whatever seconds you want, and that's it. Close it. ये dot start भी नहीं चाहिए because we used launch. All right. All right. Let's do the quiz, and then I have some more things to tell you. All right. So, in what thread, sometimes called the UI thread, it is responsible for updating the screen in an Android app. So, my hint is UI thread. UI thread is the main thread. Main. Which of the following are some of the pitfalls of directly using threads in your codes? After mentioned disadvantages, race conditions, yes. An unresponsive UI, yes. Thread is deprecated. That wasn't. That's not necessary. Inconsistent output, yes. It's also a disadvantage. Now, which of the following are true about coroutines? Once started, a coroutine cannot be cancelled. That's false. It's cancelable. Coroutine always runs on the main thread. No. A coroutine may or may not execute. That's true. Uh, oh, sorry. A coroutine always runs on the main thread. It does. A coroutine always runs on the main thread. Then coroutine avoid the need to create new threads by running every task on the same thread. Uh, actually, yeah, sorry. Once started, a coroutine cannot be cancelled. That's completely false, obviously. Coroutine always runs on the main thread. No. I was correct the first time. Coroutine does not always run on the main thread, and then coroutine may or may not execute. That is definitely true. Coroutines avoid the need to create new threads by running every task on the same thread. That's not true. This is true. Then true or false, if a function already calls a suspend function, then it does not need to be marked as suspend function itself. That is false. If a function calls suspend function, it does need to be marked as a suspend function itself. That's what we studied लास्ट में, राइट? कि अगर कोई फंक्शन सस्पेंड को कॉल करे, किसी भी सस्पेंड फंक्शन में कॉल करे, तो फंक्शन खुद भी एक सस्पेंड फंक्शन होना चाहिए. Which of the following are suspend functions? Async, lambda passed into async, run blocking, lambda passed into run blocking. So the lambda which is passed into async, that's a suspend function. Run blocking is also not. I mentioned before that async is suspend. No, async is not suspend. The get value was suspend. Async is not suspend. The lambda which is passed into async, which was get value, that's suspend. Run blocking is not suspend. The lambda which was passed into run blocking, that can be a suspend function. Which of the following are false about async and run blocking? Um, which of the following are false? Okay, both functions take a coroutine scope, a suspend function as a parameter. Both functions return a deferred. That's not true. Run async returns a deferred. Run blocking doesn't necessarily return a deferred.
So this is true. Both functions take a coroutine scope as a parameter. Yes, you'll typically not use run blocking in an Android app code. Yes, you won't typically use it. You won't be using it in a typical Android app code. When using async, you need to use a wait to access the return value. Yes, because by default, it will not wait for your code for a deferred value. It won't wait or block the execution. So you need to have this await function called. True or false, in most apps, you would create coroutines using the global scope. Um, no, false. You don't use global scope that much. What is what is responsible for determining which thread is used behind the scenes by a coroutine? Dispatcher. It's a dispatcher is used for determining which thread is used behind the scenes. Of what is similar to a promise or a future in other languages and serves as a placeholder for return value. Deferred. Fine. Then true or false, a job is a cancelable unit of work performed by a coroutine. That is true. All right. So So we did this pathway and now we have done coroutines from this code lab. Other than that, I will be sending the link of this. I really like this visual. It helps you get coroutine in a deeper way. Yeah, it's a very nice visual. Other than that, this is really helpful. It has suspending functions. Um, mm, 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 it has coroutine builders. Then it has run blocking we covered. It has launch function. It has async, concurrency, creating a hierarchy. यहाँ तक the coroutine scope builder just till here I think you should give this blog a read. I will be including this. Then there will be one or two videos also about coroutines um for you to see. Okay, and the form now tomorrow will be a session for those who are making app, and it will be a Q&A, not a Q&A, it would be like a guidance session for those who have any problems in their app. And in case you don't have a problem, you can still join the session and show me your app, or and I can give you some feedback points in your app if you can use it to make it better. So it's for the students who are working on their app. Other than that, the form will be circulated to you again, and so when the form is circulated, you can choose options other than coroutines and this certain pathway. And then whenever the next pathway session will be held, I will be covering that. And I will also be including the link to Unit three's solution code app. So that's it for today. And I'll see you guys in the next one.